Hello all, welcome back to our channel. So here in this video, I am going to tell the important questions of Hindi subject. The students those who are studying Usmania University degree of any stream, BCom, BSc, BBA or any stream, second year, fourth semester students also are studying. You people are having language subject that is Hindi. So in this video, I am going to tell the important questions and important lessons and what are the grammar topics and what are the lessons you should learn to get O grade or to get passed marks. And in this video, I am adding the expert faculty voice clip also. So listen and see this video. Don't skip the video. So now I am providing you the model paper. So in part A, out of 8 questions, you need to attempt any 4 questions. Each carries 5 marks. So part A consists of total marks 20. So 80 marks question paper. Mostly you will have 3 hours duration time, examination time. So in part A, out of all lessons, you will get 8 questions from all the lessons. So here in this part A, you will include the grammar topic also. Okay. So in part B, the question starts from ninth question. So each question has internal choice, and in part B, whether you should attempt 4 questions or 5 questions based on that question paper model, we can discuss that. So every year language paper may change. So last previous year it was 4 questions only you need to attempt, each carries 15 marks. So in this year you will get mostly probably 4 questions only you should attempt in part B. So this model paper which I am providing, which you are seeing in the screen, is very much important after completing your revision and after completing your preparation. Once prepare this model paper without seeing, because most of the repeated questions will come in this model paper only. So this model paper, if you are not visible in this video, I am providing the PDF link in the description and comment section. So that this PDF link which is I am providing in this description and comment section, so that is valid up to June ending only. After that the link may get invalid. So those who want that PDF link, so just go and check it now. So now I am adding the voice clip of an expert faculty. So she will tell the what are the lessons you should learn and what are the important grammar topic you should learn, she will tell. So once listen this voice note carefully. फोर्थ सेम की अगर बात करें तो ओल्ड पोइट्री, मॉडर्न पोइट्री, उसके बाद साहित्य, निबंध, कवि परिचय है। तो सेकेंड यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 5 लेसन्स होते हैं, तो वो लेसन्स पहले पढ़ने के लिए बोलो। और आपको जैसे कि शॉर्ट बिट और लॉन्ग बिट होता है, तो शॉर्ट बिट में सारे 5 यूनिट्स में से, माने कि 4 यूनिट्स में से सबके सब थोड़ा बहुत दे देता है, सब मिक्स करके। ओके, ओल्ड पोइट्री से भी देता है, मॉडर्न पोइट्री से भी, साहित्य से भी, निबंध से भी, कवि परिचय से भी। उसके बाद मॉडर्न पोइट्री में अगर आप चाहते हो तो एक तो निबंध होता है, निबंध के साथ एक पैरा देकर आंसर्स करने के लिए कहता है। बहुत इजी होता है वो पैरा, पढ़कर लिख सकते हो, निबंध के साथ होता है। निबंध लिखकर 10 मार्क्स एग्जाम्पल, और वो पैरा को 10 मार्क्स। उसके बाद कवि परिचय तो इजी होता है, सबको काल, उपसंहार, रचनाएं, एक जीवन परिचय जिसका उसको पढ़ने के लिए बोलो। ओके, अगर मेरी बुक फॉलो कर रहे हैं तो सब कुछ मैं 70% सेम होता है, इजीली लिख सकते हैं। ओके, एटलीस्ट प्रेजेंटेशन अच्छा रहा, साइड हेडिंग डालकर थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश की तो डाल देते हैं मार्क्स। उसके बाद साहित्य में रीतिकाल, आधुनिक काल है, तो एक छोड़ सकते हो, रीतिकाल या आधुनिक काल पढ़ सकते हो, पर दोनों थोड़ा बहुत भी पढ़ लिए तो शॉर्ट में दिया तो अटेम्प्ट कर सकते हो। एटलीस्ट नहीं पढ़ना चाहते तो एक को ही पढ़ सकते हो। रीतिकाल के 3 क्वेश्चंस या आधुनिक काल के 2 क्वेश्चंस कुछ होंगे। ओके, और चॉइस में कुछ है तो मीरा और रहीम है ना, तो मीरा अच्छे से पढ़ने के लिए बोलो। ठीक है बेटा। उसके बाद क्यों बोलते हो हम चॉइस नहीं बोल सक रहे हैं आजकल, क्योंकि हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन देकर एक अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहा है, इसीलिए। तो फोर्थ सेम में मीरा या रहीम को ही अच्छे से पढ़ लो बोलो।
कवि परिचय सब एक जैसे होते हैं। काल, जीवन परिचय, रचनाएँ, उपसंहार, साइड हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंटेंस लिखते जाओ बोलो। निबंध सभी के सभी इजी है, तो एटलीस्ट साइड हेडिंग याद रख के कुछ तो भी एक लिखो बोलो। सेकेंड यूनिट इम्पॉर्टेंट है। काल में से एक छोड़ सकते तो छोड़ो बोलो। तो देखो अब क्या करना है। So this is about the Hindi video. I hope that you people get clarity about the subject. If you have any other queries or if you have any other questions, you please comment me in the comment section and definitely reply for your question. So in this video, I'm adding the notes PDF. In that notes PDF, you people are having all the 5 units, lessons, grammar topic, summaries, etc., etc. All that you will have in that PDF, and also I'm providing the model paper which I'm giving in the description and comment section so that you can learn from that model paper, because many of the questions and lessons related questions are repeated from that model paper only. So this is all about the video. All the very best for your examination and all the very best for your preparation. From June 13th onwards, you people are having examination, so start your preparation from today onwards, because you people are not having enough time. So if you start your preparation from now onwards, so you will get time for the revision also. Okay, so if you like this video, then like, share and subscribe to our channel, and refer to your friends if you think that this video is helpful for your friends also. So if you think it's useful, then only you can please share. And if you want any other subject important questions, you please comment me in the comment section. Definitely I will upload that important questions video. Okay, so once again, all the very best for your examination. Thank you.